सबसे पहले बात करेंगे बिजली के जायद बिल्स की, जिस पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम की अपील की गई। इसके पेश नज़र चौकसी इख्तियार करते हुए पुलिस की बड़ी तादाद कांग्रेस के लीडरों के मकानात के करीब तैनात कर दी गई। सुबह 6 बजे भुंगेर के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के मकान पहुंचकर पुलिस ने उनको घर पर ही नजरबंद कर दिया। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, वी हनुमंतराव के मकानात के करीब ही पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया। कांग्रेस एमएलए को असेंबली के करीब से गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर मनमाने तरीके से रियासत में हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त सीएम ने कहा था कि मकानात के किराया तक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सैलाब के नाम पर जायद बिजली के बिल्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से लोग मुलाजमतों से महरूमी की वजह से पहले ही परेशान हैं और ऐसे में लोगों को जायद बिजली के बिल्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या यही इंसाफ है? ప్రజాస్వామ్యం కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు మాకు హక్కున్నది శాసన సభ్యునిగా మేమందరం శాసన సభ్యులందరూ కూడా హక్కు పరంగానే ముఖ్యమంత్రి గారి అపాయింట్మెంట్ అడిగినాం, ఎనర్జీ మినిస్టర్ అపాయింట్మెంట్ అడిగినాం, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారి అపాయింట్మెంట్ అడిగినాం. వీటన్నిటికీ ఇవ్వకపోవడం ఈ విధంగా అరెస్ట్ చేయడం అనేది అప్రజాస్వామికం. ఈ రోజు మేము ఖచ్చితంగా దీన్ని ఖండిస్తా ఉన్నాం. మా నాయకులు వివిధ ప్రాంతాల్లో అరెస్ట్ చేసిన నాయకులకు సంబంధించి వారు అరెస్ట్। और अब मानसून के ताल्लुक से एक अच्छी खबर, जुनूब मगरिब मानसून ने बिलाखिर तेलंगाना में जुमेरात को दस्तक दे ही दी। अगरचे के चंद दिनों की ताखीर से ही सही इसकी तेलुगु रियासत में आमद हुई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने यह बात बताई है। जुनूब मगरिब मानसून ने रियासत के निज़ामाबाद और पेदापल्ली में अपनी आमद का एहसास दिलाया। रियासत के कई इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश हो रही है। भुंगेर में सबसे ज़्यादा 17.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के दफ्तर के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के कई हिस्सों में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जियो 3 को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील करने का फैसला कर लिया है। तेलंगाना की वज़ीर बराए बहबूद ख़वातीन व इत्फ़ाल सत्यवती राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहों से इस जियो के ज़रिए कबायली अफराद को रोज़गार के मौक़े दिए जा रहे थे, अब कबायली इससे महरूम हो जाएंगे। उन्होंने इस सिलसिले में एपी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से भी ताउन तलब किया है। దశాబ్దాలుగా జియో నంబర్ 3 వల్ల అనేక మంది గిరిజనులు విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొంది అభివృద్ధిలోకి వస్తున్న క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ జియోను కొట్టేయడం చాలా దురదృష్టకరం. మరి పెద్ద ఎత్తున గిరిజనులకు అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుందని చెప్పి భావించి అనేక సార్లు మమ్మల్ని మా సెక్రటరీ గారు అలాగే మిగతా అధికారులందరం కూడా ఏ విధంగా రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలని, అది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వచ్చింది కాబట్టి రివ్యూ పిటిషన్ని రూపొందించి మరి ఈ ముందుకు పోతున్నాం. నిన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి ఆమోదం కూడా తెలిపి 2 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి మరి ఈ జియో రివ్యూ పిటిషన్ని త్వరలోనే సుప్రీంకోర్టులో వేయడం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భారత రాజ్యాంగం గిరిజనులకు కల్పించిన 5వ షెడ్యూల్లోని మరి కొన్ని అవకాశాలు ఈ జియోను కొట్టేయడం ద్వారా వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు. కాబట్టి మరి దీన్ని జియో నంబర్ 3ని కొనసాగించే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం రివ్యూ పిటిషన్। तेलंगाना रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए शुरू की गई शजरकारी की स्कीम हरित हरम का रियासती वजीर जी कमलाकर ने जायजा लिया। करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुनक़िद किए गए इजलास में मेयर, डिप्टी मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, रुकन असेंबली रविशंकर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि ज़िले भर में 43 लाख पौधे लगाने का मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत के मंसूबे पर अमल करने की उन्होंने हुक्काम को हिदायत की और अवाम में शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाने की भी हुक्काम को हिदायत दी।
सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस साल बुनालू त्यौहार को घरों में मनाने और जुलूस की इजाज़त न देने पर सख्त एतराज़ जताया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से इस फैसले पर नज़रसानी की अपील की है और कहा है कि हुकूमत कुछ तहदीदात के साथ इस जुलूस को जारी रखे। ఇంట్లోనే బోనాలు ఎక్కించుకోవాలి, పంతులు పూజ చేస్తారు. అసలు ఏమిటి ఆలోచన నాకు అర్థం కాదు. నువ్వు ఇన్ని తీసుకున్నావు, మీరు బ్రాండ్ షాపులు ఎవడిప్పన్నాడు రా బాబు? ప్రజలు అడిగినారు, ఎవడప్తాడో మేము కూడా చూస్తాం. దానికి లిమిటేషన్ చేయమని చెప్పండి. అంతేగాని సూర్యుని చూపించుండ్రి, ఇంట్లో పెట్టుకోండి, ఇది కేవలం కేసీఆర్ ఏం చెప్తే మేము అది నెట్టేందుకు రెడీ లేవు. మాకు అమ్మవారి మీద భక్తి ఉన్నది, అమ్మవారే తప్ప। एक और बेहद अहम खबर, जनूबी हिंद के अहम रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद और हैदराबाद पर कोरोना स्क्रीनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1 सेकंड में 30 लोगों की 9 मीटर की दूरी से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और इसका मकसद कोरोना को फैलने से रोकना है, साथ ही कोरोना के मुश्तबा मरीजों की जांच में आसानी करना है। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ PRO राकेश ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का दीगर रेलवे स्टेशन पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में रेलवे स्टेशन आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ तस्वीर भी ली जाएंगी और मास्क न इस्तेमाल करने वालों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत भी जारी की जाएगी। 30 people as a group of people at a split second, at 1 second, and it gives you a skin temperature. So that's easy for security guard to know it, how to separate the abnormal people and take them the appropriate actions. As we know that clearly central government has made it very mandatory that we need to screen, the thermal screening has to be done at the public places like railway stations, airports, bus stations and retail malls as well. So this is an initiative, we've taken it here and it's working out well. It scans the people from 9 meters as well, as long as 9 meters. And even group of 30 people can go into the at entry and it takes all the 30 people in a split second. And also this also maintain the social distance because it takes the count of the people as well who's going inside, so they know that how many people they're entering inside and they can stop the people if it is already full. Okay, that is another area. And the third one, it also tells the people that please wear the mask in audio mode. Secunderabad and Hyderabad stations. The system consists of a camera which actually captures the image of the passenger, incoming passengers, and also takes the reading of the passenger temperature reading, and this is displayed in the LED monitor which is attached to the system. The beauty of the system is that the system captures both the photo as well as the temperature of passengers and stores it for a certain amount of time. You can retrieve your data at almost for a month period if you require any data to be taken out. More importantly, because when have been started, each and every passenger has to undergo thermal screening at the stations. The main entrances of the Secunderabad station will be covered in this week itself, and Hyderabad station is already covered, so that whatever major stations are there in our zones, this system will be implemented. And depending on the need, obviously we'll take a call whether it has to be expanded in more number of stations. It is actually helping in a great way to prevent the spread of this. We need to educate more and more people and on the ground to be aware of the situation, and this technology is really helping in the various ways regardless of the verticals. हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले हैदराबाद के मशहूर गांधी अस्पताल में जहां पर कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहां के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल जुमेरात को भी जारी रखी और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव को हड़ताल जारी रखने का मकतूब भी हवाले कर दिया। इस मकतूब में एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सेहत की जानिब से उनके मुतालबात पर मुनासिब यकीन दहानी नहीं करवाई गई, इसीलिए वो अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक कोविड-19 के मामलात को गैर मरकूज़ करने का मुतालबा कबूल नहीं किया जाता, वो ड्यूटी से रुजू नहीं होंगे। आज भी इन डॉक्टर्स ने अस्पताल के अहाते में एहतजाज किया और अपनी ड्यूटी का बाइकआउट किया। इस हड़ताल में तकरीबन
5000 जूनियर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के दीगर मुतालबात में अस्पताल में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती, मेयारी पीपीई किट्स की तमाम सरकारी अस्पतालों में फराहमी, सरकारी अस्पतालों में मजीद इफरादी क़ुव्वत का इजाफा, कोविड-19 बोर्ड में तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के 2 अरकान की शमूलियत भी शामिल है। जीएचएमसी के मेयर बी राम मोहन और कमिश्नर रमेश ने आज जिला मलकाजगिरी के आनंद बाग का दौरा किया। उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मकामी एमएलए हनुमंत राव भी मौजूद रहे।